video will be on hash date and hash duration in Power BI. So date and duration function in Power BI. इस वीडियो में हम इन दोनों फंक्शन के बारे में देखेंगे. सो लेट्स से आपको क्रिएट करना है डेट कुछ इस तरह से 1 जनवरी 2024 डायरेक्टली inside Power Query using just one function. ठीक है जी. And not only that, you can also add days, hours, minutes or seconds to a date using another powerful function. और सिर्फ ये डेट ही नहीं, आपको ऐड करना है days, hours, minutes or seconds to a date. ठीक है. In this video I will explain two very useful Power Query functions, hash date and hash duration, and how they help you work with dates in Power BI. In Microsoft Power BI Desktop, when we work in Power Query, we often need to create or manipulate dates. ठीक है जी. Microsoft Power BI डेस्कटॉप में जब भी हम काम करते हैं पावर क्वेरी में, ठीक है, तो हमें बहुत सारे डेट्स क्रिएट करने होते हैं या मैनिपुलेट करने होते हैं. फॉर एग्जांपल, क्रिएटिंग अ स्पेसिफिक डेट, एडिंग डेज टू अ डेट, कैलकुलेटिंग टाइम डिफरेंसेस. Two functions that help us to do this are hash date and hash duration. So let's see hash date first. What does this function do? The hash date function is used to create a specific date. Okay. Hash date function is used to create a specific date. The symbol looks like syntax of this hash date function looks like this. इसका सिंटेक्स जो है वो कुछ इस तरीके से है. हैश डेट, देन ईयर, मंथ, कॉमा डे. ओके. अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो ऐसे हो जाएगी. हैश डेट, year let's say 2024, month 1 and day 15. Okay, so this will return the date 15 January 2024. Okay, let's say you want to create a column that always shows the date 1 Jan 2025.
लेट्स से आपको एक कॉलम क्रिएट करना है और वो हमेशा शो करे डेट 1 जनवरी 2025, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे इस फंक्शन को, हैश डेट then year 2025 then month 1 then day 1. Power Query will generate that date value. This function is useful when you need to create fixed dates, you want to define start dates, you want to build date logic in Power Query transformations. Now let's see hash duration. Okay, so now let's look at another powerful function called hash duration. So this function represents a time duration. Time duration. The syntax is hash duration days, hours, minutes, seconds. Okay, example will be hash duration days 2, then hours 0, minutes 0 and seconds 0. So this represents 2 days. ये क्या represent करेगा, 2 days. One interesting thing is that you can combine hash date and hash duration. For example, hash date 2024, 1, 1 plus hash duration 5000. This means start from 1 January 2024 and add 5 days. 1 January 2024 and add 5 days. Okay, the result will be 6 January 2024. Okay, imagine you have an order date and you want to calculate delivery date after 3 days. आपको कैलकुलेट करना है डिलीवरी डेट आफ्टर 3 days. Okay, you can add a duration, order date plus hash duration 3, 0, 0. Power Query will automatically calculate the new date. Let's quickly summarize these two functions. Hash date is used to create a specific date. Hash duration is used to represent time duration.
एंड यू कैन कंबाइन देम टू परफॉर्म डेट कैलकुलेशंस। इन दोनों फंक्शंस को यूज़ करके हम डेट कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, if you are learning Power BI and Power Query, understanding functions like hash date and hash duration can make your data transformations much easier. Subscribe to the channel for more Power BI concepts explained in a simple way. Thank you.